चलिए अब स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अभी तक हमने डिस्कस किया था अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? Enumerate the differences between asexual and sexual reproduction. Describe the types of asexual reproduction exhibited by unicellular organism. तो अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा हमें उन्हें लॉन्ग तरीके से आंसर करना होगा। आपसे पहले डिफरेंसेस पूछे हुए हैं कि व्हाट इज एसेक्सुअल डिफरेंसेस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम 2 कॉलम्स बनाएंगे and we will write the differences between these two, like asexual reproduction, and the other column is of sexual reproduction. ठीक है, तो what could be the differences between the two? For asexual reproduction there is no formation and fusion of gametes. There is no formation and fusion of gametes takes place. So we'll write all this: no formation and fusion of gametes. ठीक है. On the other hand, sexual reproduction में there is formation and fusion of gametes. Formation and fusion of gametes. ठीक है. For asexual reproduction, it is uniparental, means only one parent is required. On the other hand, sexual reproduction is generally biparental, 2 parents are required. और देख लेते हैं, अगर हम asexual reproduction की बात करें तो इसमें जो reproductive units होती हैं, these are the somatic cells of the body. So we'll write reproduction units are somatic cells. On the other hand, अगर हम sexual reproduction की बात करते हैं तो in this case the reproduction units are germ cells. ठीक है. और क्या हो सकता है differences between the two? Now in case of asexual reproduction it only involves mitosis. It involves mitosis. जबकि हम sexual reproduction की बात करें so gametes are formed by the process of meiosis. Gametes formed by meiosis. ठीक है. और क्या बात कर सकते हैं हम differences between the two? अगर हम asexual की बात करते हैं तो offspring produced are generally identical to the parents, है ना. तो offsprings कैसे होते हैं? Offsprings are genetically identical to the parents. Right? On the other hand, इस केस में they are not identical, they are not genetically identical to the parents. है ना. तो ये डिफरेंस बन सकता है. अब इसमें आप एक डिफरेंस खुद अपने आप सोच सकते हो, बिकॉज इसमें ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, सो देयर आर नो वेरिएशंस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ asexual reproduction. On the other hand, variations are there from the offspring produced from sexual reproduction. ठीक है. variations are present in the offsprings which are formed from sexual reproduction. और क्या डिफरेंस हो सकता है? like asexual reproduction की बात करें, so this is very fast and simple process. On the other hand, sexual reproduction की बात करते हैं, so it is slow, elaborate and complex process. ठीक है.
So these could be the differences between asexual and sexual reproduction. तो हमने अपने पहले क्वेश्चन को आंसर कर दिया, that is the difference between asexual and sexual reproduction. आगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, types of asexual reproduction. किसमें? इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो दो ऑर्गेनिजम्स यहाँ बात कर लेते हैं, टाइप्स भी बात कर लेंगे उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में. वन वील टॉक अबाउट अमीबा and the other we'll talk about yeast. You know, there are various types of asexual reproduction occur in different organisms, in unicellular organisms. Now, if we talk about, we'll take amoeba as one of the example, and in amoeba, the kind of which is unicellular, the kind of asexual reproduction occur is binary fission. किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में? asexual binary fission. तो सिंपल इसमें क्या होता है, वन सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. वन सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाइनरी फिजन. किसमें हो रहा है? अमीबा में. किस तरह से? वन सेल है, वेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. एक और बात कर लेते हैं, द अदर इज ईस्ट. ईस्ट इज अ फंजाई. Yeast में there is a process that is called as budding. Unequal division होता है. What happens is that buds is arise on the surface of the parent body, है ना, and it remains attached until it gets mature for the nutrition. Once it gets mature, it gets separated and lives as its own individual. So the process which takes place in budding, which is a kind of asexual reproduction, which takes place in yeast, and a kind of asexual reproduction is budding. ठीक है. तो हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था, टाइप्स ऑफ asexual reproduction, that is binary fission in yeast and exhibited by unicellular organism, that is amoeba and yeast. ठीक है. तो binary fission and budding are the two types of asexual reproduction occurs in amoeba and yeast. चलिए आगे बढ़ते हैं. Do all the gametes formed from a parent organism have the same genetic composition, that is identical DNA copies of the parent genome? Analyze the situation with the background of gametogenesis and provide or give suitable explanation. ठीक है. तो इसके लिए आपने क्लास 11th में मियोसिस पढ़ा है, सेल साइकिल पढ़ा है, सेल डिवीजन पढ़ा है. वी नो दैट देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवीजन. वन इज माइटोसिस एंड द अदर इज मियोसिस. एंड मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन जिसके थ्रू हमारे सेक्स गैमीट्स बनते हैं. मेच्योर्ड सेल, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स पे मियोसिस चलता है, एंड देन वी हैव द हैप्लॉइड सेक्स सेल्स, है ना. तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, डू ऑल द गैमीट्स फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म हैव द सेम जेनेटिक कॉम्पोजिशन? नो. The gametes formed from the parent have different genetic composition because they do not have identical copies of the parental genome, identical copies of the gametes. You know, जब gametes बनते हैं, then the gametes formed during the process of meiosis. अब आपको पूछा है कि background of gametogenesis बताना है. So basically किससे होता है? This is by the process of meiosis. ठीक है. दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. किस तरह से हम बताएंगे? पहले तो आप उसमें ये लिखोगे, नो द गैमीट्स फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द सेम जेनेटिक कॉम्पोजिशन बिकॉज दे डू नॉट हैव द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए. ठीक है. इस तरह से आप पहले क्वेश्चन को आंसर करोगे. अब आपको टेलिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ गैमेटोजेनेसिस कि किस तरह से बनता है, हाउ दिस, व्हाई दे डू नॉट हैव द सेम कॉपीज ऑफ गैमीट्स. So basically what you have to tell in this question, that you have to little specify the process of meiosis. You know, when we have studied about meiosis in class 11th, you must have learned about the prophase 1, the stages that occurs in prophase 1 of meiosis 1. So there is a stages that is called as Pachytene and Diplotin. Right. So in Pachytene and Diplotin stages, there is, crossing over takes place, chiasma formation takes place. And because of this, because of the crossing over and the chiasma formation takes place, the gametes which are formed is actually have different genetic composition. Why? Because there is the change of the segments of DNA which brings the new genetic composition sequences of DNA.
ठीक है, तो अब अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो न्यू देयर विल बी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सो डेफिनेटली दे विल ब्रिंग द चेंज इन डीएनए सीक्वेंसेस दैट विल ब्रिंग अबाउट डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ द डीएनए. ठीक है, सो दैट इज वाई द गैमीट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट आर नॉट ऑफ द सेम genetic composition. They have different sequences of DNA, hence they varying, you know, they are different in a little degree of variation. ठीक है, तो आप कैसे आंसर करोगे इसे? फर्स्ट तो लिख दोगे नो and then all this line, the gametes formed from the parents do not have the same genetic composition because they do not have the identical copies of DNA. फिर आप कैसे बोलोगे इसको? Analyze this situation आपको बताना है. So you'll write in Pachytene and Diplotene stage of meiosis 1 crossing over and chiasma formation takes place. जिसकी वजह से क्या होता है? there is a change in genetic composition of DNA sequences. Hence, the gamete formed have different genetic composition. है ना? Because there is a change in genetic composition of DNA sequences, because there is exchange of the chromatids between the two homologous pair. Hence, the genetic composition is also changes. It brings out the new DNA sequences. Hence, the gamete formed from the parents, from the meiosis, do not have the same genetic composition. They have different genetic composition. So this is how you will answer this question, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. What says next? Although sexual reproduction is a long drawn energy intensive process form of reproduction. अभी हमने देखा था that when we are learning about the differences between asexual and sexual reproduction, that sexual reproduction is a very long, elaborate and complex process. Many group of organisms in kingdom Animalia and Plantae prefer this mode of reproduction. Means still it is a very long elaborate process. Still the organism of the higher organism prefer this kind of reproduction. Give at least 3 reasons for it. मतलब कहने का ये है कि though it is a very complex process, most of the higher organisms preferred these type of reproduction. तो ऐसा क्यों है? What is the reason behind it? You know why sexual reproduction? Number 1 reasons कैसे लिखोगे? Reasons are, तो हम उसमें सबसे पहले ये बताएंगे, sexual reproduction brings variations. है ना? ये हमने अभी डिफरेंस की उसमें भी किया था when we were learning about the difference between asexual and sexual. So sexual reproduction brings variations in an offsprings. पूरा इसको ऐसे लिखोगे, in an offsprings. क्यों variations आते हैं offsprings में? Because we have also studied that the reproduction unit of sexual reproduction is the sex cells, and sex cells are formed from the meiosis. And we know that crossing over takes place during the meiosis. So if crossing over takes place during the meiosis, that means the genetic composition will change. It will bring the different degree of variation in the gametes, in the sexes produced from the meiosis. And these gametes are the units of sexual reproduction, right? So हम कैसे लिखेंगे इसको? The reproductive units in sexual reproduction are germ cells or sex cells, which is formed
by meiosis, in which crossing over takes place. Which is a source of, crossing over is a source of change in genetic composition of the gametes. है ना, इसकी वजह से ही gametes में different DNA sequences बन जाते हैं because of the crossing over. The chromatids have been changed in homologous pair. ये हमने पहले भी discuss किया. That is why it is the variations takes place in case of sexual reproduction. है ना, अब देखो variations अगर आएंगी किसी भी reproduction में, तो अगर variations आपके offsprings में आएंगी, it will be a better chance of survival in the change environment. अगर आप जैसे हो वैसे ही रहोगे और आपका environment बदल जाएगा, तो you will not adapt yourself to the change environment. So that means क्योंकि variations occurs in sexual reproduction, so the organisms, third reason आप कैसे लिख सकते हो, organisms have better chances of survival in changed environment. ठीक बात है? So these are the three reasons that why, though sexual reproduction is a very elaborate and complex process, but still most of the higher organisms preferred the sexual reproduction. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 4. Differentiate between estrous and menstrual cycles, oviparity and viviparity. Cite an example for each type. तो आपको डिफरेंस बताने हैं तो आप टैबुलर फॉर्म में उसे कॉलम वाइज लिख के जस्ट एलैबोरेट द डिफरेंस बिटवीन द टू. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें क्या बताना है? फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें बताना है अबाउट डिफरेंस बिटवीन estrus and menstrual cycle. So first we'll write estrus cycle in one column and menstrual cycle in another column. ठीक है? तो what are the differences between the two? One difference is it occurs in non-primates. है ना? And on the contrary, it occurs in primates. ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पे आपसे एग्जाम्पल भी पूछा है तो ये भी एग्जाम्पल डाल दो. फॉर एग्जाम्पल नॉन प्राइमेट्स की बात करते हैं तो जैसे काउज, शीप्स, डॉग्स, है ना? यहाँ बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, monkeys and apes. ठीक है? Now estrous cycle की बात करें, so there is no differentiated of the different phases as occur in menstrual cycle. Menstrual cycle हम अभी पढ़ेंगे क्लास 12th में. इसी टॉपिक के बाद थर्ड टॉपिक है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन. उसमें आप पढ़ेंगे that there are phases that takes place in case of menstrual cycle, है ना? And on the contrary, estrous cycle is just it is a short period of estrus or heat. On the contrary, it goes through different phases, and the phases are menstrual phase, है ना? Then we have proliferative phase. Then we have secretory phase. है ना? इन्हीं के बीच में there is one more ovulatory phase where the ovulation takes place. So basically it is a short period of estrus and heat. In case of estrous cycle, menstrual cycle is been divided into different phases. So this could be a difference between the two. Now estrous cycle की बात करें तो estrous cycle के during there is no shedding of blood takes place, है ना? तो blood do not shed.
ऑन द कॉन्ट्री यहाँ पे ब्लड शेड्स, है ना. एक और डिफरेंस लिख सकते हैं, एंडोमेट्रियम की बात कर ले रहे हैं. ईस्ट्रस के साइकिल में, ईस्ट्रस साइकिल के ड्यूरिंग endometrium, it is one of the lining of the uterus, one of the secondary sex organs present in females. So endometrium is absorbed, it does not shed. matlab with blood certain tissues are also shed in case of menstrual cycle, but tissues is what talking about, we're talking about endometrium. So endometrium is reabsorbed or absorbed here, jabki is case mein endometrium lining also sheds. ठीक है, so these are few differences between what? Between estrus and menstrual cycle. Now this is, we have answered this much. The remained is oviparity and viviparity. तो इसको भी आंसर कर देते हैं यहीं पर, oviparity and viviparity. तो first we'll write oviparity, oviparous, and then is viviparous. है ना. तो ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच, नंबर वन डिफरेंस हो सकता है, विच लेज एग्स, whether it is unfertilized or fertilized, but it lays eggs. On the other hand, viviparous की बात करें तो it give birth to young ones, है ना. एग्जाम्पल भी यही देख लेते हैं. इस फॉर द ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स, दीज आर बर्ड्स and insects. On the other hand, अब हम viviparous की बात करते हैं तो these are mammals, जैसे dogs, cats, humans. So viviparous animals are those animals which give birth to young ones. Now क्योंकि as we can see that it lays eggs whether it is fertilized or unfertilized, so that means it lays eggs outside the body, so that is why chances of survival is less. Chances of survival is less. On the contrary, because the development is inside the body of the organism, inside the female body, so chances of survival is more. है ना. तो इससे हम एक डिफरेंट और भी इनैमोरेट कर सकते हैं, दैट डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग is outside the body of the female because it is laying egg outside. So outside the body of the development of offsprings is outside the female's body, है ना. जबकि इसमें development takes place inside the female body. है ना. तो अब इसे एक डिफरेंस को और भी इनैमोरेट कर सकते हो और भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज डेवलपमेंट इज आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी, सो डेफिनेटली देयर इज वेरी लेस, देयर इज नो एक्चुअली पेरेंटल केयर, है ना. मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज लेस. ऑन द अदर हैंड इसमें देयर इज मच मोर पेरेंटल केयर बिकॉज द डेवलपमेंट इज टेकिंग इनसाइड द फीमेल्स बॉडी. दैट इज व्हाई द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज more in case of viviparous animals. So these could be the differences between oviparous and viviparous animals. So this is what this question is asking, that differentiate between estrus and menstrual cycle and differentiate between vivipary and ovipary. चलिए आगे देखते हैं. Okay, rose plants produces large attractive bisexual flowers but they seldom produce fruits. है ना. फ्लावर्स तो प्रोड्यूस करते हैं, रोज फ्लावर्स बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, बट देन दे डोंट प्रोड्यूस फ्रूट्स. ऑन द अदर हैंड अ टमेटो प्लांट प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स दो दे हैव वेरी स्मॉल फ्लावर्स. Analyze the reasons for failure of fruit formation in rose.
तो क्यों फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो पाता रोज में? Still, like they produce very beautiful bisexual flowers in large number, still there is a failure of fruit formation in rose. तो reasons बताने हैं आपको. Both these plants, rose and tomato, both selected by human beings for different characteristics. The rose for its flower and tomato for its fruit. Rose being vegetatively propagated do not need to produce seeds. है ना? एक तो ये रीजन है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, है ना? तो एक और क्या रीजंस हो सकते हैं फॉर दिस, that why fruit formation does not takes place in case of rose plants? So there are various reasons could be, है ना? क्या रीजन हो सकता है? The flower may not have the viable pollen grain. तो एक रीजन हम क्या लिख सकते हैं? Flower may not have viable pollen grain, है ना? एक क्या हो सकता है? Flower may not have functional egg. हो सकता है the plant rose flower is self incompatible, उस केस में भी fruit formation नहीं होगा. So that means there may be self incompatibility. ठीक है? One more reason could be there must be, because pollen tube is also necessary to grow for the fruit formation. So it might be possible that there must be some internal barrier that stops the growth of pollen tube on then for fertilization. है ना? तो यहाँ भी लिख सकते हैं ये point that there may be some internal barrier that stops the growth of pollen tube or fertilization. ठीक है? तो these may be the reasons why the fruit formation does not takes place in case of rose plant. ठीक है? So I guess this is all for long type questions. So with this we have finished about short answer type questions and long answer type question. So actually we have completed the topic 1, that is reproduction in organism. We have finished objective type, we have finished very long type, then short type, then long answer type. So with this session, in this video, we have completed topic 1, that is reproduction in organisms. In the next video, we will start with the new topic, that is what? Sexual reproduction in flowering plants. ठीक है? तो अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस सारे डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट फ्रॉम टॉपिक 2, that is sexual reproduction in flowering plants. So next video say we'll discuss topic 2 from class 12th. So that's all for this video. I hope you have enjoyed and you got everything what we have mentioned in the video. That's all.